guys, what's up and welcome back to my channel. My name is Mohammad Rafi and you are watching RAYTECHSTUDIO. As you know that our last video was about the Lian Li Streamer Plus V2 extension cables guys, and in that video we promised you that we will be going to make a video on the latest generation of Lian Li SL Infinity fans as well guys. Basically these fans are the upgraded model of the SL Infinity 120 fans guys, and these are available into the both black and white colors guys. These fans are available into two variants, a pack of 3 and also available into the pack of a single fan as well. And today we are going to review the pack of 3, and for this I will like to thanks to the Lian Li for collaborating with us and giving us a chance to review these fans guys. Don't forget to subscribe our channel guys. Also press the bell icon ताकि आगे आने वाली तमाम वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहें. And without wasting any of the time now, let's start the show. First of all, let's do the unboxing of these amazing fans guys and let's see कि इसके अंदर आपको उन्होंने क्या contents वगैरह जो हैं वो दिए हुए हैं. Starting from the design and the build quality of these fans guys, these fans have the design characteristics of the both Unifan SL and also the Unifan AL guys. These fans also have the trim lightning like the Unifan SL guys, also the mid hub lightning like the Unifan AL guys. In addition guys, Lian Li has given you an extra lightning feature into these fans, which are the Infinity mirror guys, which are located on the both side of the fan, also located at the mid hub of these fans guys. Moreover, they have given you a aluminum logo of the Lian Li on the other side of the central hub guys. And all these RGB lightning in a combined form gives a really dope look to the whole fan guys. And talking about the build quality of the fans is really decent. These fans are made up of the PBT plastic frame and polycarbonate rotors. And talking about the Infinity mirrors guys, the Infinity mirrors are made up of acrylic strips which gets too much scratchy after the passage of time guys. But Lian Li has given you a really great solve for these guys. They have provided you protectors which you can apply on these Infinity mirrors guys, which will protect them from the scratches. And talking about the upper side of these fans guys, Lian Li has provided you 2 interlocking locks guys, which helps you in connecting the fan with the other fan. Also guys, if your fan is not getting fixed and not getting adjusted on the radiator due to the pipe outlets guys, then you can easily remove these interlocking locks and then you can easily fix the fan with the radiator. Lastly, these fans also have the anti-vibration pads located at the all 4 sides of the fans, which reduces the unnecessary vibrations and the noise. Now talking about the specification of these fans guys, these fans have the maximum speed of 2100 RPM and the max airflow of 61.3 CFM. Also guys, these fans produces the maximum noise level of 29 decibels, which I think is really great. Even at the full speed, these fans will not create much noise. And talking about the bearing of these fans have the fluid dynamic bearings like the old generation of the Lian Li fans.
Now talking about how to set up these SL Infinity fans, guys. First of all, if you want to connect more than one fans, it's so much easy. You just need to connect the other fan over here, and just keep in mind about the directions over here which is being mentioned, क्योंकि गाइज अगर डायरेक्शंस वगैरह का इशू आएगा तो आपको इन पिन्स वगैरह के जो है वो टूटने का इशू भी आ सकता है. सो गाइज पुटिंग द कनेक्टर्स ओवर हेयर एंड जस्ट यू कैन सी द डायरेक्शन, you just need to move like this, then these are connected, guys. After connecting these, guys, you have to set up the fan connector which comes into the box of the Lian Li triple pack. ओके गाइज, ओवर हेयर आप देख ही सकते हैं कि इसके साथ जो है ये दो SATA पावर कनेक्टर्स हैं जो कि आपने अपनी पावर सप्लाई के साथ जो है वो कनेक्ट करने हैं इसको पावर करने के लिए. मोरओवर गाइज, ओवर हेयर यू कैन सी द 4 पावर कनेक्शन केबल्स जिसके साथ आप अपनी पावर कनेक्शन केबल्स लगाएंगे और अपने फैंस को जो है वो कनेक्ट करेंगे. एंड एट द डाउन साइड यू कैन सी अ 1 USB कनेक्टर जिसके अंदर आप USB कनेक्शन करेंगे अपने मदरबोर्ड के साथ इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके सॉफ्टवेयर के साथ जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं उनके साइड पे जाके, जो है वो L-Connect 3 उनका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है. Plus, not talking about this small cable, over here you can connect the 3-pin RGB header जो कि आपके मदरबोर्ड में आपके RGB header के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप इसकी जो है वो लाइटनिंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं. एंड टॉकिंग अबाउट these 2 cables, guys, these 2 cables are the data cables जो कि इसको पावर करने के लिए जो है वो आपकी हेल्प आउट करेंगी. ओके गाइज, now talking about connecting the fans. फैंस की जो है वो ऊपर साइड पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो कनेक्शंस वगैरह बने हुए हैं और निचली साइड पे भी जो है वो आपके पिन कनेक्टर्स जो हैं वो बने हुए हैं. पिन कनेक्टर्स करने के लिए गाइज आपको बॉक्स के अंदर जो है यू विल सी दिस केबल गाइज, जो कि आपकी ये वाली साइड जो है गाइज आपके इस कनेक्टर के अंदर जो है वो ईज़िली जो है वो इस तरह करके लग जाती है. ओके, और टॉकिंग अबाउट द अदर एंड जो कि आपका पिन कनेक्टर है गाइज. पिन कनेक्टर लगाने के लिए गाइज आपको जस्ट इसके ऊपर प्रॉपरली अलाइन करना है इसको लाइक दिस, एंड देन आपने जो है इसको इसकी सही डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव करना है लाइक दिस. वेल गाइज, रिमेंबर अबाउट दिस के वाइल सेटिंग अप दिस केबल कीप रिमेंबर अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द कनेक्शन गाइज, बिकॉज अगर आपने इसमें गलत डायरेक्शन के अंदर इसकी कनेक्टिविटी की तो गाइज ये इशू हो सकता है, इसकी पिन्स वगैरह जो हैं वो भी टूट सकती हैं. ओके गाइज, वन मोर थिंग जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई है वो ये है गाइज कि अगर आपने केबल की डायरेक्शन को इस साइड पर या फिर बिल्कुल स्ट्रेट साइड के ऊपर मूव करना है, यू जस्ट नीड टू रिमूव दिस स्मॉल लैच ओवर हेयर एंड देन यू कैन मूव इट ओवर हेयर or also in the opposite direction as well guys, and then after turning the cable just connect it back and you are good to go. So guys, after downloading and installing the L-Connect 3 software from the site of the Lian Li and after opening it into the screen guys, you can see सबसे पहला टैब जो आपके पास नज़र आता है that is system info, and in the system info you will see the 2 tabs. सबसे पहला टैब जो है वो है system resource का, जो आपको आपके CPU, RAM और GPU और स्टोरेज के बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है, लोड्स के बारे में भी बताता है और क्लॉक रेट्स वगैरह फैन स्पीड के बारे में भी आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देता है. एंड टॉकिंग अबाउट द अदर टैब जो है वो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस का है, जो आपको शो करता है आपकी तमाम स्पेसिफिकेशन सिस्टम की. नाउ टॉकिंग अबाउट द यूनिफैन मोड्स एंड द कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ द फैंस गाइज, गोइंग इनटू द टैब ऑफ द फैन एंड पंप RPMs गाइज. ओवर हेयर यू कैन ईजिली कंट्रोल ऑल ऑफ द फैन मोड्स गाइज. यहाँ से आप क्वाइट और स्टैंडर्ड और हाई परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं. उसके अलावा दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू एडजस्ट द फैन कर्व रियली ईजिली फ्रॉम ओवर हेयर गाइज. अपनी चॉइस के मुताबिक जो आपकी फैन कर्व्स हैं वो स्पीड वगैरह को जो है आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. Now guys, talking about the lighting of the unifan guys, for that you need to go into the SL Infinity lighting tab guys, and over here you will see the 4 connections for the fans guys. इसके अंदर जो है आप 12 fans जो हैं वो easily connect कर सकते हैं. We have installed the 6 unifans into this
एंड यहाँ से हमें जो है वो पता चल जाता है कि इस टैब के अंदर और इस कनेक्शन के अंदर जो है वी हैव इंस्टॉल्ड अवर फैंस गाइस, बिकॉज इट्स ओनली द टू एयर टैब्स जो कि आपको शो कर रहा है आपके RPM. इट मीन्स के फैंस आर रनिंग इनटू दीज टू कनेक्शंस गाइस. नॉट टॉकिंग अबाउट चेंजिंग द फ़ैन मोड गाइस. फ़ैन मोड को चेंज करने के लिए आप यहाँ से भी जो है अपने फ़ैन मोड को चेंज कर सकते हैं, क्वाइट भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपकी फ़ैन बिल्कुल भी आपकी जो है वो नॉइस क्रिएट नहीं करेंगे. हाई परफॉर्मेंस पे भी कर सकते हैं, फुल परफॉर्मेंस पे यू कैन ऑल्सो सेट योर फैंस गाइस, एंड ऑल्सो यू कैन सेट योर ऑन प्रीसेट फॉर दीज मोड्स एज वेल गाइस. नॉट टॉकिंग अबाउट द LED मोड्स गाइस. LED मोड के अंदर यू फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द LED मोड गाइस. LED मोड्स में आपके पास जो है वो 3 वेज के अंदर जो है आप इसके LED मोड्स को जो है वो सेट कर सकते हैं. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट LED मोड गाइस, यहाँ पर जो है एक इसका इनर रिंग है और एक जो है वो आउटर रिंग है. एंड आल्सो गाइस दिस सॉफ्टवेयर अलाउज यू टू individually control these rings, and also you can control in a combined form. अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी इनर फैन की भी जो है वो लाइट कुछ और रखें और आउटर रिंग की जो है वो कुछ और रखें, देन यू कैन ईज़िली चेंज फ्रॉम दीज टाइप गाइज. एंड टॉकिंग अबाउट द मोड्स गाइज, देयर आर मैनी मोड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था स्ट्रीमर केबल के अंदर, सेम एज लाइक दैट these unifan also have many modes, and like same modes over here as well guys, which you can also set from over here guys. And these are the 4 fan which you can control, और यहाँ पर जो है आप उसकी कलर्स वगैरह जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं. Moreover guys, if you want some custom color, you can import export your preset as well. Now guys, talking about the brightness, you can also adjust the brightness from over here really easily according to your software into 4 modes. Really great guys. Talking about the overall software guys, it's really easy and really simple. इसमें इतना कुछ जो है वो समझने की आपको ज़रूरत नहीं है. You can easily set all of the Lian Li components that you have installed into your chassis guys. Now talking about the price and the warranty of these fans guys, the pack of 3 is available for the price of guys $100 and the pack of single fan is available for the price of $30 guys, and Lian Li is given you a warranty of 2 years on these fans guys. My only complaint with these fans is about the price tag guys. आप देख ही सकते हैं कि प्राइस टैग जो है वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में जो है वो ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों के लिए जिनको डिज़ाइन और एस्थेटिक्स और जो है वो लाइटनिंग वगैरह जो है वो RGB की चाहिए होती है, मेरे ख्याल से वो ये प्राइस टैग जो है वो ईजिली अफोर्ड कर लेंगे. Anyhow guys, these was Lian Li Unifan SL Infinity. Thank you so much for watching my video guys. If you have any query, you can mention into the comments. We will surely answer you, and I will see you into the next one now.